Darlings, I love you. Please. Hi, darlings. Me and my little cow are here to talk about darlings. Yes, Alia is the darling of Bollywood. This movie is a darling of mine. I absolutely loved it. And I have so much to say because when you have four powerhouse performers working together, they light the screen on fire, and light the screen on fire they did. Hi, darlings. Hi, darling Kirti. We are darlings to each other, Yeah. and I love the Ali and Shafalia's darlings. What a pleasant surprise! What a Yes. pleasant surprise! Yes. So as you can tell, ponytail, red lipstick, red dress. I am Alia. I am Badru. Who are you? I'm Shamsun Nisa, the Oh, auntie, you the are my khalaji. mom. I'm your mommy for Okay, tonight. mommy, let's talk about this movie. I loved it. I have to say, this is one of the best movies of this year. The four characters, they were so believable. The actors were so solid. Alia Bhatt, Shefali Shah, Roshan Matthew, Vijay Verma, so good. ये लोग ना excel करते हैं in their craft. इनको पता है कैसे बोलना है, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी अमेजिंग है और मुझे लगता है स्टोरी टेलिंग वाज सो गुड. एक पॉइंट भी नहीं था जहां मुझे लगा कि ओके ये थोड़ी खिंच रही है. मुझे लगा every scene was a build up to the next और लग रहा था कि हाँ यहाँ से यहाँ जाएगी फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, लेकिन when the climax comes, you still have no idea कि आखिर में होगा क्या. And I love that about this movie. Kirti, darling is a surprise package of 2022. I think I had the best movie experience, and you rightly put it. I think Alia Bhatt has proven that not only she's a brilliant actor, she's a very fine producer. What Yes. a year she has! She has Gangubai, then she has RRR, and now Darlings. So what a year! She is really the global star right now. Yes. और like you said कि उसने जो ये अनसॉम्ब रखा है, कूडोज टू आलिया, क्योंकि ना सिर्फ उसने ये कास्टिंग अपने साथ रखी है, बल्कि इतनी स्क्रीन स्पेस देना जहां पे मूवी इट डजंट कम अक्रॉस एज के जी इट इज आलिया ओन्ड, इट इज Yeah. एवरीबडी ओन्ड. दैट द बेस्ट पार्ट. हर एक कैरेक्टर को इम्पोर्टेंस मिली है. हर एक या कैरेक्टर का सोलो सीन भी है. ऐसा नहीं कि सिर्फ आलिया के साथ दिखते हैं. नो, दे हैव देयर ओन एंगल्स गोइंग ऑन टू. मुझे वो बहुत पसंद है बिकॉज इजीली ये उसकी प्रोडक्शन है. इट्स हर बेबी. शी इज द लीड एक्ट्रेस. वो चाहती तो हर एक जो खाने वाला सीन है ना वो उसके पास जाता. एग्जैक्टली. लेकिन यहाँ नहीं है. शी हैज ब्रिलियंट सीन्स, but so does Roshan, so does Shefali, so does Vijay, so does the cop, so does the एग्जैक्टली. butcher, Qasim. I feel like द टीसी सीनियर, दैट yes, सीनियर बॉस ऑफ या him, even जो beauty parlor चलाती है, her. एग्जैक्टली. Every actor aced it, every supporting cast member aced it. And यही मजा है मूवी का, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अच्छा ये बंदे का सीन है, अच्छा I can take a break. No, हर एक सीन में कुछ ऐसा मिलता है देखने के लिए that you take it with you. मैं storytelling की बात करती हूँ, and I have to say it was so good. You can tell कि ये एक female led film है. Jasmeet Reen, ये उसकी I think पहली movie है as a director, and she hit it out of the park. The reason I'm so excited कि a female is playing the lead here and a female is directing, क्योंकि you can tell कि जिस तरह की treatment हुई है ना ये subject, ये domestic abuse subject की, बहुत अच्छी तरह हुई है. You see the angst, you see the anger, you see the helplessness, you see the डर, you see कि रिवेंज लेना है पर नहीं लेना, मैंने बाहर जाना है इस रिश्ते को तोड़ के, नहीं मैंने नहीं जाना. You see the struggle that women who have faced domestic violence have gone through. As each scene came, as each minute progressed, वो दिख रहा था कि ये कहाँ से कहाँ जा रही है स्टोरी और कहाँ मोड़ लेगी. Even in the first scene, जब ये दो characters introduced होते हैं, ये बद्रू and Hamza, they're dating. वो उसकी वेट कर रही है. शी हैज अ फायर, वो लड़ती है कि मैंने प्लान्स बनाए थे, उसका फुस्की बम बन गया है. ये शो की फाइस्टी है. कट टू इनकी शादी होती है. 3 years later
पूरा चेंज है उस फर्स्ट सीन में, द डिनर सीन, पता लग जाता है कि देयर वेडिंग, देयर मैरिज इज नॉट ओके, क्योंकि वो उसको इंटरप्ट करता है, बात फिनिश नहीं करने देता। शी वांट्स टू टॉक अबाउट अ बिल्डर, वो कहता है वो छोड़, है ना। वो खाना बना के देती है उसको, लाइक अ कंकर गेट स्टक इन हिज माउथ, है ना। ऐसे ट्रेम्बलिंग हैंड्स करती है वो, है वाओ। ना। वो निकालता है ना, वो रखती है, सेकंड बाइट फिर कंकर, एंड दिस टाइम you know the subtle way her hand was shaking, you knew कि अब कुछ होना है, and suddenly bam, something happens. These actors are brilliant क्योंकि you could feel the घबराहट, the tension building. जिस तरह से स्टोरी को हैंडल किया गया, आई थॉट के जॉनर इज डार्क कॉमेडी, वेयर एज इट टर्न आउट टू बी द रियलिटी। जैसी एक्टिंग की है, जिस तरह से सीन्स लिखे गए हैं, Yep, it looks like it's familiar territory, it's scary, this is yep, life. You know, the naturalization of sexism and the normalization of patriarchy, it is so embedded beautifully in the movie, ताकि yes, आपको नजर आता है कि एक्चुअली होता क्या है। 100%. The locality एक तो इतनी believable थी ना, because it was like real people living real lives. यहाँ उनको साफ साफ सुनाई देता है कि एग्जैक्टली। arguments हो रही है, मार तोड़ हो रही है ऊपर, and then they ignore it. They even if they don't ignore, they acknowledge, oh, इनका फिर से चालू हो गया. That's it. Because दैट्स इट। everyone feels like this is a system. यहाँ patriarchy है. The man leads the household. The man has dominion over the woman. And the woman चाह कर भी ना कुछ कर नहीं पा रही of her situation. And the people around, the women who know this is happening, they are helpless. क्योंकि वो क्या करें? अगर वो खुद जो lady suffer कर रही है वो नहीं कर पा रही, तो वो क्या ही करेंगे? जितना टाइट स्क्रीन प्ले ना कीर्ति, उतने ही टाइट उन्होंने कैरेक्टराइजेशन रखी है। Yep. लुक एट बदरूज, यू नो शी इज दिस नाइव गर्ल, लव पपी, हु आई फील लाइक शी इज सफरिंग फ्रॉम दिस स्टॉकहोम सिंड्रोम, जहां पे शी इज इन लव विद द अब्यूजर टाइम एंड Yep. अगेन। वो बार Yep. बार उसको मैनिपुलेट करता है, बार बार अब्यूजिव होता है, लेकिन Yep. अगेन शी इज वर्किंग सो हार्ड इन हर मैरिज। वो कहती Yep. नहीं, मैं आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, Yep. आई री इन्वेंट ऑल द वेज जहां पे मैं इसको इस मैरिज में बांध के रख सकूं। Yes. शायद ये शराब की वजह से करता है, Yes. शायद ये दारू छोड़ दे तो ठीक हो जाएगा। जो लोकेलिटी है, जो माहौल दिखाया गया है, चाहे वो चॉल सेटअप था कि एवरीबडी नोज के इट इज रॉन्ग बट दे आर हेल्पलेस Helpless. एंड दे आर सो accustomed to it. You know, Yeah. there was this scene, she went to this pharmacist एंड पहले रिएक्शन क्या आता है, वो उसको एंटीसेप्टिक देता है कि चलो ये अपने ब्रूजेस को ठीक करेगी। दे Yeah. नो इट, हर हस्बैंड इज अ वाइफ बीटर, दे नो Yep. इट कि इनके साथ ये चलता है। फिर Yep. वो उसको एज ए सेकंड रिएक्शन सैनिटरी पैड्स देता है, देन शी इज लाइक नो, मुझे ना दारू को ठीक करने की दवा दो। हमें बड़ा क्लियर नजर आता है कि एवरीबडी इन द सोसाइटी इज परफॉर्मिंग देयर नॉर्मल चोर्स Yep. एज इफ कुछ हो नहीं रहा। लुक Yep. एट दैट ब्यूटी पार्लर वाली, वो एक तरफ मेहंदी से सोनू का एस लिख रही है और ऊपर साथ साथ देख रही है, हाँ ये तो अभी क्या नाम है, दारू पी के इसको मार रहा है। सो Yeah. एवरी करेक्टर, एवरीथिंग इन द मूवी इज लाइक रियल लाइफ। इतनी Yes. खूबसूरती से इन्होंने सिचुएशन को बनाया। शेफाली शाह का इंट्रो सीन इतना अमेजिंग था ना। वो कैसे अपनी बालकनी में खड़ी है, एंड देन शी इज टेकिंग द कड़ी पत्ता प्लांट फ्रॉम हर नेबर्स, एंड वो चुराती है पत्ते। हर डॉटर इज लाइक, अम्मी ये क्यों कर रही हो? एंड देन शी इज लाइक, ऐसे ही बोर हूँ घर पे और मैं क्या करूंगी। सो बोर आई हूँ घर पे। लव्ड इट, दैट शोज कि the mother crosses those lines for fun, like bored है तो अपना time वो waste नहीं करना चाहती, कुछ करना चाहती उस time में। शेफाली शाह, I think उस जैसा कोई actor नहीं है। She has not been utilized as much as she should have, but thankfully in these last few years we see her, and I want to see her more and more and more, क्योंकि शेफाली शाह जब screen पे आती है ना, she lights it up. Even जब focus उनके ऊपर नहीं होता ना, you see her eyes, you see her mannerisms, you see her body language. She's doing something, the way she delivers her line. For instance, जब रोशन मैथ्यू भी आता है for the first time, जुल्फी वो आता है, he's selling his appliances कि ये मिला है, ये बंदी off हो गई है और ये या वहां से लेके आया हूँ, and she's bargaining कि नहीं नहीं नहीं, 300 नहीं 100, 300 नहीं 100। फिर आलिया आती है, and आलिया is like, अच्छा कितने का? And then he's like, हाँ जो उन्होंने कहा था, so and then she takes out the money, she goes, oh मेरे पास सिर्फ 50 हैं, and he's looking at her like, what? मैंने ना दूसरे पैसे से दवा ले ली अपनी, क्योंकि जख्म हुआ है, and she's showing कि bruise है, so she's playing that card and he's looking at her and like, अच्छा, oh my god, okay ठीक है इतना ठीक है। Each character was
so believable in that scene, and यहाँ से पूरी फिल्म तक हर एक का कैरेक्टर बैठा है, and we know exactly ये कैरेक्टर क्या फील कर रहा है और क्यों फील कर रहा है. शम्सुन्निसा जो शेफाली शाह ने प्ले किया, कोई और प्ले कर ही नहीं सकता था. दैट Yep. पार्ट वाज सो ट्रिकी, क्योंकि नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि एक ब्रोकन मैरिज के अंदर या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर मदर्स आर दोज जो कहती है बेटा इस शादी को चला ले, Yeah. कुछ कर ले. एंड हियर शी इज अ ग्रेट सपोर्ट टू हर डॉटर एंड अ वेरी बैड एडवाइजर एज वेल. शी इज लाइक तू इसको चूहे मार की दवाई दे दे, जान छुड़ा इससे. एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट इट. लेकिन शम्सुन्निसा के लिए शेफाली शाह जो है वो अपना खून पसीना किया उस औरत ने, वो Yes. नजर आता है. शी डजंट नीड 100%. वर्ड्स, शी डजंट नीड स्क्रिप्ट. उसकी आंखें बहुत है, यू नो She देम has the most सच. expressive eyes. वो एग्जैक्टली. दिखता है, is she angry? Is she sad? Is she, in this vengeful mood? क्योंकि अपनी बदरू को लेके she's a protective mom कि ये मेरी बच्ची है, मैं चाहती हूँ कि उसकी जिंदगी बेहतर हो जाए, so leave this guy, leave him, लात मार के आ जा तू. The daughter doesn't want to, but still every time something happens to her daughter, she's there for her. And even वो जो सीन आता है ना, वो बैठे हुए उसके घर पे वो टीवी देख रहे हैं, कुकिंग शो देख रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, एंड वहां पे वो कॉन्वर्सेशन फिर आती है कि उसने फिर तुझे मारना है, एक दिन वो तुझे मार डालेगा, तू पहले निकला कुछ कर, तो वहां से वो प्लान्स हैच होते हैं कि नहीं उसकी ड्रिंकिंग छुड़ानी है. बिकॉज यू नो व्हाट, in this domestic violence topic, a lot of people search for what's contributing, and yahan daru was the tool कि ये दारू पीता है, फिर इसका अंदर का जलाद जागता है ना, वो भी कहता है, उसकी माँ कहती है, वो कहती है, so she thinks दारू निकालो, he will be a perfect husband. When he finds out कि उसने वो दवा ली है एंटी एडिक्शन वाली, did you see how his expression changes? वो जब घर पे आता है डार्लिंग्स बजता है ना, I was like, oh shit. I have never been scared of this word darlings. लेकिन इस मूवी ने जो मुझे enlighten किया है कि Yeah. darling is an expression जहां पे आप दूसरे को infantilize भी कर सकते हो, because once the Yes. speaker becomes the one with Yes. authority और दूसरा Yeah. control में होता है, okay darling do this. विजय वर्मा ने जो menace चाहिए था, Oh. जो viciousness चाहिए था, उसने जो justice किया है, I think star of this movie has to be विजय वर्मा hands down. He और was that is why amazing. yeah, इतना तगड़ा परफॉर्मर है और उसने उसको इस रियलिटी में बदलना है, क्योंकि आपको नजर आता है कि ऐसे बंदे जो रियल लाइफ के अंदर बड़े आपको प्रोफेशनल लगते होंगे, आपको ठीक ठाक नॉर्मल लगते होंगे, वो अंदर से किस कदर वेनमस होते हैं. जो लोग बहुत प्रोग्रेसिव बनते हैं और अंदर से उतने ही रेग्रेसिव होते हैं. उस चीज को जिस खूबसूरती से उसने दर्शाया, तो रिलेटेबिलिटी नजर आ रही होती है. वो एक सेकंड में वो ना खुश, लाइक calm, serene, लेकिन पता है कि दिमाग में ना कभी भी ट्रिगर हो सकता है और उसके अपना रूप बदलना है. He's a वो जो मैं simmering कह रही pot. हूँ, वो Yeah. सीन जिसमें वो आया, when he finds out, वो कैसे सीधा वो जाता है किचन में, and he said क्या खिचड़ी पक रही है, क्या like खिचड़ी पक रही है? what plan are you doing? And फिर he like literally is pushing her head into this boiling pot, है ना? And I was like, oh my god, she's so in it. Suffocation जो हो रही थी ना, मुझे लग रहा था हाय क्या लगे ना इसको. So believable. His eyes, they look like such menace, like vicious eyes, है ना? उसकी body language कैसे change होती थी, face, there wasn't a friendly cell in his body in these kind of scenes. Yeah, he was so brutal and monstrous. और दैट इज वाई आपको बदरू के कैरेक्टर के लिए बुरा लग रहा होता है कि टिल व्हेन शी इज गोइंग टू सर्वाइव दिस. उसकी मदर जो उसको बार बार पुश करती है कि छोड़ दे इस आदमी को, वो जस्टिफिकेशन नजर आना शुरू होती है. और विजय वर्मा ने जिस ऑथेंटिसिटी के साथ इस नेगेटिव शेड को लेके आया है, वो क्या नाम है, तारीफ के काबिल है, बल्कि अवार्ड के काबिल भी है. द मूवी टुक अ प्रॉपर टर्न जहां पे जुल्फी वो ही लैंड्स अप टू आलिया's प्लेस व्हेन शी इज सो एंग्री के उस मुझसे बर्दाश्त, वो फटने के कगार पे बर्तन तोड़ है जब उसका इतना ज्यादा वायलेंस हो चुका है. एंड देन ही वेंट एंड डिड दैट कंप्लेंट थिंग, और वहां पे मूवी सारी चेंज होना शुरू हो जाती है. उससे पहले भी हमजा ने एक लाइन कही थी, एक रात पहले, he's fighting her, he's abusing her, फिर सुबह उठ के वो कहता
कि किस मियाँ बीवी में झगड़े नहीं होते, सबकी पतंग अटकती है। यस, एवरी कपल फाइट्स, देयर इज आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन इस लेवल की नो 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 नो। एंड ही हैज डन दिस गैस लाइटिंग सो मच, यू नो। यस साथ ही वो कहता है कि इस ऑमलेट की तस्वीर तो मैं खींच के डालूंगा सोशल मीडिया पे, बिकॉज माई वाइफ मेक्स वर्ल्ड बेस्ट ऑमलेट। एंड शी यस सच अ फूल, उसको रियलाइज ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो हर दफा मान जाती है, यप। because he sweet talks into, you know, this normalization. द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज वो जेल वाला सीन, जब कंप्लेंट फाइल होती है, वो दोनों पहुंच जाती है, ओह माय गॉड, इनको पता तो नहीं चल गया हमने क्या करना था, ये वो देन दे फाइंड आउट कि जुल्फी हैज पुट द कंप्लेंट इन, एंड फिर पूरा चेंज होता है। हाँ, ये मुझे मारता है, हाँ मुझे कंप्लेंट फाइल करनी है, क्योंकि उसकी माँ कहती 3 साल, 3 साल की ब्रेक मिली, दैट्स लाइक फ्रीडम। यू थिंक 3 years is nothing, but for everyone who suffers through this abuse, 3 years is a lifetime. तो वो कहती है हाँ Yeah, ठीक है, अब पेपर वर्क करो, मैं आती हूँ उसको मिलके। फिर she goes there, he knows how to play her. Why? बच्चा। he brings up that बच्चा। topic, उसको बच्चा चाहिए, वो कहता हम बच्चा करेंगे, बच्चा करेंगे तो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि आई डोंट वांट कि वो अपने बाप जैसे बने। तो वो सुन के खुश, लाइक ओके, कि माँ तू अभी मेरा साथ दे रही थी ना, अब आई डोंट वांट यू, तू मेरा घर क्यों बर्बाद कर रही है। हमें सबसे पहले क्या चीज जो मैंने नोट की है, जो मुझे बहुत पसंद आई, एक तो दैट पुलिस वाला, ही इज इनटू फाइलिंग द कंप्लेंट इंस्टेड ऑफ, यप। यू नो, गेटिंग रेड ऑफ हर, जो नॉर्मली हम देखते हैं, यस अरे घर का मसला यस है, घर चली जाओ। यहाँ पे मुझे, यू नो, जरूर तारीफ करनी है कि आपको एक ऐसा आदमी, मर्द भी नजर आता है जो यप चाहता है आपके साथ जस्टिस हो। यप नंबर दो, ये द कॉन्वर्सेशन बिटवीन दैट कॉप एंड द शमसुनिसा, ही इज यप लाइक, खाला दुनिया चेंज हो गई है, एंड यप शी इज लाइक, दुनिया सिर्फ ट्विटर पे चेंज हुई है, यप। यहाँ नहीं हुई है। कोई फिर भी ट्वीट कर सकता है, कोई भी पोस्ट डाल सकता है कि आई एम या सो वोक एंड वुमेन्स राइट्स एंड ये वो फलाना, एंड देन अपनी रियल लाइफ में कुछ पता नहीं, बिहाइंड क्लोज डोर्स कि ये क्या these हो people रहा है follow. एग्जैक्टली। देयर वाज अगेन वन लाइन बिटवीन देम, शी इज लाइक के आदमी दारू पी के इतना जल्लाद क्यों बनता है, तो ही इज लाइक, क्योंकि औरत बनने देती है। आई Yes. वाज लाइक, वो वन ऑफ वन जो कॉन्वर्सेशन थी, एवरी वर्ड वाज बैंग ऑन। और जब हम यहाँ पे ब्रिलियंस देखते हैं विजय वर्मा की, कि कैसे वो मैनिपुलेट करता है Yes. आलिया भट्ट, ठीक है कि तुझे मैं जानता हूँ, मैं तेरे साथ बुरा हूं, लेकिन एक लाइन उसने बोली जहां पे बड़ा क्लियर हो गया कि, यू नो, वो बंदा किस कदर मिसोजिनिस्ट है, किस कदर पेट्रियार्कल है। Yes. जब वो Yep. उसको बोलता है, प्यार ना करता तो तुझे मारता नहीं, और अगर तू प्यार ना Exactly. करती तो तू सहती नहीं। For a second, I got scared. ये movie kahan ja rahi hai is sounding very misogynistic right now. Is this victim blaming happening here? You're getting what you deserve, or you're getting because you are like this, you're in this relationship, this is what's going to happen. I was like, oh God, I don't like it. But then, this cop's lines were very effective, क्योंकि he's like, ये लड़कियां जो औरतें हैं, why are they staying in this? Why is this system of society so against women, and their rights and their freedom? ये क्यों स्टिग्मा बन जाता है अगेंस्ट वुमेन? क्योंकि लड़के को तो कुछ नहीं देखना पड़ता है, लड़की है ना, वो ही मार खा रही है, और वो मार खाना नहीं चाहती, वो फिर डिवोर्स देगी, लेकिन ना ना ना, डिवोर्स नहीं ले सकते, क्योंकि डिवोर्स इज बैड। व्हेन हमजा कम्स आउट ऑफ द जेल, पोस्टर लगा है बाहर के हैप्पी वुमेन्स डे, और यप पोस्टर वो कह रहा है कि मेक श्योर कि एवरी डे इज सेफ एंड हैप्पी फॉर द वुमेन। वी टॉक अबाउट द वुमेन सेफ्टी ऑन रोड्स, व्हाट अबाउट द हर सेफ्टी एट हर प्लेस, जहां पे वो यस सबसे ज्यादा होती है। हर इनर डेंजर, हर हाउस, हर डोमेस्टिक इश्यूज कैन बी द मोस्ट लीथल। और वहां पे जब उसकी माँ उसको समझाती है कि बिच्छू की फितरत है, वो डंक मारेगा, तू समझ जा। शी इज लाइक, माँ मेरा घर मत खराब कर। कहती, मैं तेरा घर नहीं खराब कर रही हूँ, अभी तू बोल रही थी सारे मर्द बुरे, सबको गोली मारूंगी, एवरी यप मैन इज नॉट बैड। विच एक्चुअली, चाहे वो पुलिस वाला था, चाहे वो काजिम या बुचर। बुचर था, हाँ, या फिर ये जुल्फी का जुल्फी। करेक्टर, एवरी मैन इज नॉट बैड। The crazy thing for me, for this Hamza's character, वो अभी अभी जेल से निकला है, गाड़ी में बैठते हैं वो उफ, टैक्सी में, okay, उफ, and then through his interaction with his mother-in-law, he like hits her and she starts bleeding. I was like, look at his courage. This is courage या insanity, कि जिस चीज के लिए तू ऑलमोस्ट जेल गया है, अब वही चीज तू अपनी मदर इन लॉ के साथ कर रहा है। एंड देन आई वाज heartbroken for Shefali, एग्जैक्टली। because her daughter didn't stand up for her, and there she was like, तू अभी पिक कर, या मैं या वो,
You And have then to you see choose. Alia's Yeah. look and she goes back to her abuser. I think both Alia and Shefali killed it in that scene. They were unbelievable. And then, the storytelling is so great. जैसे हमने कहा था ना कि बच्चा, because a lot of people think कि relationship खराब है ना, बच्चा पैदा करो और अच्छा अरे, हो this जाएगा. is what we are taught. She gets Yeah. pregnant. All of a sudden, she's happy. She's knitting the baby boots. And then you realize, baby isn't the answer. Because all of a sudden, Mr. Hamza, he thinks कि उसका affair चल रहा है. That scene, OD, जब वो दोनों स्कूटर पे बैठे थे, and side mirror पे Vijay shows his eyes and Roshan is looking. Goosebumps. And then you see what happens to her and her breakdown at the end of the consequence. So real. वो कैसे रो रही थी with abandon. उसका दर्द नजर आ रहा था. She just loses a baby. And जो वो betrayal, जो गुस्सा वो channel करती है ना इसके बाद, it was amazing to see. इस पर्टिकुलर सीन के अंदर ना हमें आलिया भट्ट की जो एक्टिंग प्रोग्रेस नजर आती है. शी इज टू स्केयर टू ओपन द डोर. She, hides herself in the washroom, and the way Vijay Verma का monster उसको सीढ़ियों से गिराता है, टक टक Oh, टक. My heart was beating at such a speed yeah, कि नहीं, नहीं, not now, not now. And जिस तरह से शॉट किया गया है, sheer brilliance. आपको नजर आता है कि गलत क्या है, सही क्या है. और उधर क्या नाम है, जो आलिया भट्ट एज ए बदरू समझ नहीं पा रही थी कि उसको क्यों चूज करना है अपनी माँ के yeah, और अपने हस्बैंड के बीच में. जब शी लॉस्ट हर चाइल्ड, देन yeah. शी रियलाइजेस कि व्हाई माय मदर वाज लाइक Yes. दैट. वो जो विशेस थे ना कि इस साल पे ये होगा, ओ इस साल पे गॉड, ये होगा. ओह गॉड, फर्स्ट वो बेबी, जैसे ओ क्रॉस गॉड. करती है बेबी पर, माय हार्ट वाज लाइक ब्रोकन. बिकॉज 100% उसको तब रियलाइज होता है कि मेरी माँ मेरे लिए क्या कर रही थी. बिकॉज अ पेरेंट, अ मदर can go through anything for her child, and yahan she या lost her child before she could even see the child's face. तो क्या दर्द उसको हुआ होगा, क्या एंगर होगा, एंड कैसे वो उसको सबक सिखाती है. जो जो गेम्स उसने वो जूते के साथ उसके साथ खेली थी ना, वो सेम गेम ओ उसने. हो, that हाईलाइट. scene that scene where first she gets up in the red कि चलो मैं अपने husband को रिझाती हूँ, maybe it'll make him feel good and we can move on. That backfired. The husband never showed up. Then the second time she wears the red, bruises हैं everywhere, cuts, bruises. वो कहती, I'm in a ponytail because you hate ponytails. She's sitting in the red and he's like, तू क्या कर रही है? She goes, I'm doing what I want. तू ये paper अभी के अभी sign कर. She's showing I have power through these bruises, through these scratches, through this physical and mental trauma I'm going through. I'm gonna show you now how strong I am. Alia Bhatt was amazing in that scene. And Vijay Verma, जो लाइक विक्टिम बना हुआ था ना उस सीन में, आई वाज लाइक ये क्या है ये बंदा, दिस मॉन्स्टर हु इज नाउ ट्राइंग टू बी द विक्टिम. कीर्ति, इस पूरे एंटायर सीक्वेंस के अंदर जो मुझे मजा आया, पहले वो अपने हस्बैंड को सेड्यूस करने के लिए करती Yep, है उस yep, ड्रेस को ऑर्डर, लेकिन वो उस पर भारी पड़ता है. एंड yep. दिस टाइम व्हेन शी पुट्स दैट थिंग ऑन, इट वाज द एक्ट ऑफ रिबेलियन. क्या मैं तेरे अगेंस्ट जाती हूँ? और फिर उसके साथ वो खेलती है जिस तरह से Yeah. खेलती है, वो उस पॉइंट पे उसको ला दिया गया कि फिर अब आपको जस्टिफाई लग रहा होता है. यू कांट से दैट शी इज बीइंग रॉन्ग because she was so wronged. Kirti, what's that saying? Hell hath no fury like a woman scorned. And yes, 100% yahan Alia was showing her mettle. Let's just say हमें खुद देख के पता नहीं चल रहा था ये कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, कौन साथ देगा कौन साथ नहीं देगा, क्या विजय एस्केप कर पाएगा, क्या वो वापस बदरू को अपने जाल में ले लेगा. When the second jail scene comes and वहां when they're trying to hash कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ गया नहीं गया, I think the whole thing was brilliant. It shows on the spot कैसे spontaneous हैं ये दोनों औरतें कि अच्छा ये हमने बोला है, अच्छा ये नहीं हुआ, अच्छा ये हुआ, अच्छा ये नहीं हुआ, अच्छा फिर ये होगा. Even जुल्फी वहां खड़ा होकर देख रहा है कि what are these women, and then you find out कि the women are ready to throw him under the bus. खासकर Yeah, शिफाली. ये जो माँ बेटी की जो कमराडरी दिखाई है दोनों ने, वो Yes. पॉसिबल ही ना होती, आप उसको एंजॉय ना कर पाते, रिलेट ना कर पाते, अगर ये दोनों एक्ट्रेसेस ना होती. एंड थैंक गॉड दैट वी हैव एक्सपीरियंस सच पावर हाउसेस कमिंग टुगेदर.
आलिया एंड शेफाली, दे लुक सो रिश्तेदार लगती हैं, बाकी माँ हाँ, बेटी लग रही थी। आई लव जब कॉप्स आते हैं और वो कहते अच्छा जुल्फी तू क्या कर रहा है यहाँ, अफेयर है ना तेरा, एंड वो कहता व्हाट, फीलिंग्स है, दिल को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इसके लिए नहीं है। खाला क्यूट है। It's for her. ही इज लाइक खाला खाला, क्यूट लगती है। खाला कहता है, and she's like हाँ, and then all of a sudden वो कहती नहीं 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 हाँ ये ऐसा नहीं कर सकता, you know, she was ready to throw him under the bus but not anymore, and then hello, under the door frame, that kiss, I was like, wow. Her husband has been gone, and then this young guy is showing interest in her, and she's like, okay, I'm ready for this too. आलिया वाज लाइक अम्मी अभी चलो। अभी इसके लिए टाइम नहीं है। धीरे धीरे जब क्लाइमैक्स आता है, द स्टोरी ऑफ द मेंढक इज सेड अगेन, एंड दिस टाइम इट्स इन आलिया's वॉइस। लोग ना अपनी चाल बदल नहीं सकते, दे कैन ट्राई फॉर अ लिटिल बिट, but at the end of the day, who they inherently are, वो ही बाहर आएगा. So you think, okay, man, she's gonna get her revenge, she's gonna off him, ये वो, and then when she has the opportunity, she's like, यार ये बिच्छू है, पर मैं क्यों बिच्छू बनूं, मैं इतना कर ट्रू चुकी हूँ, मैं क्या इसकी ट्रू। जैसे होंगी? नो, क्योंकि अगर मैंने इसके साथ कुछ कर लिया, ये पूरी लाइफ मुझे ये ना हॉन्ट करेगा. When you do an action, you can't take it back. That's always gonna come up here or there. कोई ट्रिगर होगा और ये बात याद आएगी. You know, ये बदरू का जो ग्रोथ मैच्योरिटी हुई थी ना इस सीन में, इस मूवी में, it was commendable. and वहां शेफाली शाह का सीक्रेट पता चलता है. Incredible. ये जो जिस तरीके से दिखाया गया था कि व्हेन शी इज गेटिंग रिड ऑफ हमजा, और वहां पे शी इज इमेजिनिंग के आई एम गेटिंग डेक्ड अप, और सडनली शी सीज ब्लूज और वो जा रही है उधर, उसकी माँ और जुल्फी उसको बुला रहे कि तू इस तरफ आ जा, Yep. लेकिन देन शी रियलाइजेस कि नो, आई एम अ मेंढक, Yep. आई एम नॉट अ बिच्छू, आई कांट बी बिच्छू फॉर अनदर बिच्छू। वो इसलिए वर्क करता है क्योंकि लेक्चरबाजी नहीं है उस सीन को जिस तरह से आपको दिखाया गया है, आपको समझ में आता है कि यस, नो, टुवर्ड्स हर फ्रीडम, टुवर्ड्स हर बदला गेटिंग ओवर, Yeah. शी इज लाइक नो, दैट्स नॉट मी, that's not my reality. The look you see in Shefali's eyes when she says that, Oh, hi, hi, hi. This director, what I love about it is not preachy. बिना कहे इतना कुछ कह yeah, देते हैं ना, because बिना कुछ कहे इन्होंने ये दिखाया कि you do your thing, जो कर्मा है ना, it's gonna strike. Like life has a way of working things out. जो जिसको मिलना है वो मिलके रहेगा. She lives her life doing what she wants to do without compromising who she is. And then you see कि हमजा के साथ क्या होता है. So Odi, the best thing I love about this is कि आलिया didn't compromise who she is. क्योंकि अगर वो पूरा प्लान करती जैसे उन्होंने प्लान किया था, would we sympathize with her still? Would we be making excuses for her because she did what like Vijay Varma propelled her to do? Or do we like कि she has grown up and moved away from that situation? You know, क्योंकि वो भी फिर violence justification होती. yeah, the ending has been very critical, क्योंकि there was a moment जब उसको खोल देती है, and he is once again कि चल मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे चांस दे, मुझे चांस दे, कहती है नहीं, मैं बदलूंगी, मेरी लाइफ ठीक हुई तो क्या तेरे साथ दोबारा रीस्टार्ट करूं। Yeah. एंड देन बिफोर द क्लाइमैक्स ही सेड वन लाइन, जैसे तेरी बेटी को मारा तुझे भी ठिकाने लगा देता। एंड आई वाज लाइक दैट मैन वुड नेवर चेंज, एंड यू कैन ब्लेम अल्कोहल, यू कैन ब्लेम एनीथिंग, बट इट इज द मैन दैट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम दारू में नहीं है, प्रॉब्लम उसके पीने वाले में। लोग कहेंगे हाँ उसकी जॉब अच्छी नहीं थी, he was in a dead end job, उसका रहन सहन अच्छा नहीं था, he wasn't in a आलीशान area. Hello, वहां जुल्फी भी था, like we said, Yeah. वहां ये butcher भी था, like we said, वहां ये cops थे that were trying to help these women. So there's a lot of men out there who are ready to step up and help women who are in distress. And yes, I'm not just saying that women are the only victims, vice versa. Men can also be the victim of abuse. So मुझे लगता है कि we can't just paint everyone in a single brush. And I love that this movie shows that. And you know, another thing we didn't really talk about that much that I loved about this movie were the dialogues. Dialect में जैसे ये बोलते थे ना, एक तो मुंबईया थोड़ा तड़का था उसमें, and then the Urdu. I loved it क्योंकि एक तो Urdu is so pretty, but second of all, I loved वो contrast between the माँ बेटी and the police officer. वो कहता अच्छा निस्सा निस्सा, हम निशा कहते हैं, और फिर कहता खा
ख ख कैसे कहते हो? कीर्ति, वी हैव नोटिस्ड कि ये जो आलिया भट्ट का करेक्टर था, जब डायलेक्ट की बात चल रही है, वो प्लूरल करके बात करती है चीज को। डार्लिंग्स, गुड लक्स, Yep. ठीक है, नेटवर्क्स, वो प्लूरल करके बोलती है ताकि वो ये दिखा सके कि या मैं एक सर्टेन कम्युनिटी से ही हूँ। एंड वो जो डायलॉग की बात करें तो वो ओपनिंग नंबर में भी था। प्लीज, आई लव दैट सॉन्ग, सो क्वर्की, सो फन, पूरा मूड सेट कर देता है वो गाना इस मूवी के लिए। ओडी, द बैकग्राउंड स्कोर वाज अमेजिंग, है ना? अपबीट ब्यूटिफुल। अपबीट, फिर जैज में जाता है एंड दिस मेनिसिंग साउंड कम्स एंड यू नो कुछ होने वाला है। आई थॉट द साउंड ट्रैक वाज मैग्निफिसेंट। विशाल भारद्वाज है ना जो डू जिसने वी साउंड एक्सपेक्ट ट्रैक बेटर दिया? देन विशाल भारद्वाज? ही इज Yeah, एक्सीलेंट। कीर्ति, जब हम गुलजार और विशाल भारद्वाज की बात करते हैं, जो मैजिक वो क्रिएट करते आए yeah. हैं, इवन इन दिस मूवी द लिरिक्स आर डरते डरते ड्राई फ्रूट हो गए, एंड दैट इज सच अ द सेल आउट फॉर मी। ठीक है, पिस्ते पिस्ते पिस्ता हो गए, एंड आई वाज लाइक डैम। कि यस। कोई complicated words नहीं थे. You know, they're या describing their life and everyone can understand what they're saying. That was like the beauty of it. So Odie, you and I thoroughly enjoyed this movie. हमें acting बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, हमें storytelling बहुत अच्छी लगी, direction बहुत अच्छा लगा. You know, अब मुझे लगता है कि पार्ट 2 भी होना चाहिए इस मूवी का. हम देखेंगे शिफाली शाह और रोशन मैथ्यू का क्या होता है. शम्स निसा और जो जुल्फी है, उनका एक स्पिन ऑफ तो बनता ही है, चाहे हाँ. सीक्वल ना हो, स्पिन ऑफ हो जाए। Amazing. So guys, that's it for us today. Please comment below and let us know कि आपको ये movie अच्छी लगी. Who was your favorite actor in here? Who was your favorite character? And also, if you haven't seen this movie, you have to go see it. And follow us on Instagram. I am Pari602. Odie is. Oris_Instateen. There you have it. Please like, share, comment, and subscribe. And let us know what else you want to see from us. Until next time. Badru. Amni. चल डार्लिंग, बाय। Bye.